preparation? How is going on? Everything okay? ठीक ठाक चल रहा है सब? मुसाविर गारू गुड मॉर्निंग. अरे सिंपल मीन कहाँ चले गए अभी तक? People are very irregular. इतना irregular हो गया क्लास में. हाँ? You are that much irregular in the class. क्या हो गया रे बाबा? बोलो कैसा चल रहा है? Everything okay? अरे मम्मी आने के बाद इश्यू क्या रे बाबू? बहुत खुश होना चाहिए ना. गेट की रेलवे इंजीनियरिंग आउटकम ले लो. If you want to study, go with some crash course of Rajendra Prasad sir. Don't go with full length course. Gate require airport engineering. Railway very rare condition gate may ask. So go with any crash course of RP sir. Hello Harsh. Nice Himanshu. Thanks for that. अरे 45 डिग्री इधर तो कम हो गया क्योंकि साइक्लोन आ गया ना. साइक्लोन आने के बाद इधर कम हो गया टेम्परेचर. इधर तो 38-40 चल रहा है बस. ऐसा भी हो जाएगा निपुण गारू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाँ दैट इज व्हाई यू डू क्रैश कोर्स फ्रॉम आरपी सर अनवर. ड्राई स्टेट. अरे ड्राई स्टेट को आएगा साइक्लोन आएगा. एक दो दिन में उधर भी शिफ्ट करेगा अभिषेक. डोंट वरी. चलो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे. सो चैप्टर नंबर क्या होता है? व्हाट इज चैप्टर नंबर? इमरान हाउ आर यू? चैप्टर 8 मैक्सिमम फ्लड एस्टिमेशन. ये चैप्टर से हमको गेट में एमएसक्यू आने के लिए पॉसिबिलिटी था. फ्रॉम दिस चैप्टर ना गेट एग्जाम में पॉसिबिलिटी ऑफ एमएसक्यू और 1 मार्क क्वेश्चंस. बट दिस इज द मोस्ट फेवरेट चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. कंपलसरी क्वेश्चन आएगा. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर ईएससी के लिए. गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना फेवरेट नहीं है बट ईएससी को बहुत फेवरेट चैप्टर है मैक्सिमम फ्लड एस्टिमेशन. सो फ्लड क्या होता है पता है ना आपको ऑलरेडी. फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द कैनाल, फ्रॉम रिजर्वायर पानी बाहर आ गया, ओवरफ्लो हो गया. फ्रॉम वाटर बॉडी, फ्रॉम सोर्स और फ्रॉम कैचमेंट पानी बाहर चले गया, ओवरफ्लो हो गया. ओवरफ्लो होने की वजह से सराउंडिंग रीजन को पूरा का पूरा डूब गया. ओवरफ्लो ऑफ वाटर causing all surrounding regions sink into water. That a huge rainfall which makes sinking of surrounding region. निपुण गारू का कार भी डूब गया इनका अंदर. लक्ष्मी गारू का घर भी डूब गया पानी के अंदर. ऐसा होने के बाद then we can say it's a flood. So this flood will cause damage to property, damage to human life, damage to animal life and total damage to the environment, nature. So nature या environment को damage करने वाला rainfall इनको बोल रहे हैं हम flood. So, एक जगह में 30 साल 30 years में in one location at 30 years so many floods will occur. But taking the previous data, taking catchment condition, taking the location condition, approximately we estimate what should be the maximum value of flood. That determination, finding maximum discharge in a catchment. That determination we study under maximum flood estimation. So हम previously flood frequency analysis कर लिया ना, point rainfall analysis, probability statistics method से. उधर सिर्फ हम बात किया whether it will occur not occur. What is the percentage of occurrence? What is the percentage of not occurrence? What is the percentage of safety? What is the percentage of risk? But we never talk about magnitude. Magnitude, discharge quantity, how to find out. नहीं बात क्या हो रहा है? इधर बात कर रहे हैं. We are talking here amount of flood occurring, amount discharge of flood going to occur. And specifically we talk about a catchment, not in a city, not in a human living area. We are talking in a river, in a lake, in a reservoir, in a catchment. क्योंकि सिटी में फ्लड आ गया, सिटी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग डूब गया तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि सिटी में ड्रेनेज कंडीशन, नाला सिस्टम इज देयर, वाटर विल फ्लो इनटू ड्रेनेज सिस्टम. ये एक रिवर या रिजर्वायर में ओवरफ्लो होगा तो रिवर पानी भी बाहर आएगा ना. इट विल डैमेज एंटायर सराउंडिंग से ह्यूज लॉस. समझ आ रहा है? रिवर का पानी है, रेनफॉल का पानी है, दोनों साथ साथ में बाहर आएगा. दैट विल क्रिएट अ ह्यूज डैमेज टू द सराउंडिंग. सो आवर फोकस इज ऑन टू द फाइंडिंग इन अ कैचमेंट, नॉट इन अ सिटी. राइट डाउन फर्स्ट. Flood is an unusual stage in a river. Flood is an unusual stage in a river. And water accumulated. किसी को स्लाइड शो नहीं हो रहा है? Anyone facing the same? गौरव एक बार रिफ्रेश करो ना. गौरव जी एक बार रिफ्रेश करो. Water accumulates to such a level that overtops the banks. And inundates. Inundates means submerges. Adjacent areas, causing damage to properties or life or even environment.
flood occurs mostly due to heavy rainfall over catchment. So before talking about estimation, we'll talk about types of floods. Chalo, done. Classification of floods as per CWC. CWC is Central Water Commission. Central Water Commission, CWC. Central Water Commission, CWC. So first one, design flood. So when you are designing a hydraulic structure, like a dam, weir, barrage, canal, whatever the flood you are considering, it should be a 30 years maximum flood, mostly, or even bridge also, any structure. So that flood considered while designing the hydraulic structure, that is design flood. Flood adopted while designing hydraulic structures. So what is the optimum time period we consider for design of structures? Obviously the optimum time period is 30 years. Optimum बोल दिया, not maximum. Maximum तो होता है 50 to 100 year. समझ आ रहा है? Maximum तो होता है 50 to 100 year. Because we have not mentioned whether the structure is a dam, weir, barrage or canal. Hydraulic structure में कुछ भी आता है ना. Canal आएगा, reservoir आएगा, weir आएगा, छोटा bridge भी आएगा, culvert भी आएगा, छोटा structure भी आएगा. इनको हम 100 years नहीं दिएगा निपुण गारू. For dam you can write 100 years. For barrage you can give 30 years. For canal you can give 30 years. Culvert you can give 15 years only. So overall देना पड़ेगा. Overall, so 30-year flood data. Considering from 30-year flood data we can take. We consider it from 30-year flood data. That is called design flood. SPF. Standard project flood. SPF. So this is said to be greatest flood. Standard project flood. Greatest flood that occur due to severe combination of meteorological and hydrological factors. Meteorological and hydrological factors. So this is assumed or theoretical only. It is a theoretical flood only. Means you are analyzing standard project flood. Yes, that is only the severe combination of meteorological and hydrological. Means बहुत ज्यादा cyclone मिल गया, very heavy cyclone आ गया with highest depth of rainfall that damages the structures तो break हो जाएगा, टूट जाएगा. That is called standard project flood. Greatest flood combination. But ये तो practically नहीं हो गया बेटा. सुनो, ये तो हम imagine कर रहे हैं, on paper हम लिख रहे हैं, हम imagine कर रहे हैं theoretical flood. Then practically occurring क्या होता है? Practically occurring the same SPF which is physically possible. समझ आ गया? Previous 30 year, 50 year, 100 year data लेके हम analyze कर लिया. ये एक लोकेशन में, for example, निपुण गारू का घर में last 30 to 50 years में क्या क्या floods आ गया. So what is atmospheric condition? एक flood आ गया, it has given highest depth of rainfall. और दूसरा flood आ गया, एक cyclone. दोनों मिक्स करा दिया. दोनों साथ में आने के बाद क्या हो जाएगा? That is standard project flood. समझ आ गया आपको? There are two different floods. One is giving you highest hydrological condition, means highest depth of rainfall, and there is another one which is creating a largest cyclone, second flood. दोनों मिक्स करके साथ में आने के बाद क्या हो जाएगा? Theoretically derived किया. That theoretically derived combination of floods. SPF. Standard project flood. Is that clear? It is maybe may not be physically whether it will occur, will not occur. Again probability. Theoretically ये होता है नहीं होता है पता नहीं. Future में हो जाएगा नहीं हो जाएगा. Then same standard project flood which is already happened. Physically एक जगह में already happened. इनको क्या बोलते हैं? PMF. Probable maximum flood. Physically happened SPF. Probable maximum flood. Absolute maximum बोलते हैं इनको. Absolute maximum. PMF probable maximum flood. अरे ये PM relief fund नहीं है. PM relief fund तो देना पड़ेगा ये फ्लड को, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला फ्लड है. इनको बहुत extreme flood which is physically possible. Extreme flood which is physically possible क्या हो गया? Greatest depth in a location means physically occurring highest depth बोल रहे हैं इनको. Probable maximum flood is said to be physically occurring SPF.
So practically happened SPF क्या होता है? Practically happened SPF, what is it? Occurred physically, इसको क्या बोलते हैं? PMF. So theoretically is SPF, practically is PMF. So here you can write SPF is 40 to 60% of PMF for the given drainage basin, for the given catchment. एक catchment को कौन ज्यादा होता है then? For the given catchment, for the given drainage basin, who is highest then? Who is more damaging? कौन damaging होता है? SPF damaging होता है, PMF damage होता है? बोलो. अरे बाबू SPF देखो एक बार, SPF बोलने वाला. It is only 40 to 60% of PMF. अभिषेक, दिव्यांशु, कुणाल ओके, कुणाल और दिव्यांशु ओके, हर्षगारू, आशीष, संयम, साहिल, check करो एक बार. Means PMF is 100%, SPF is 40 to 60% only. So you can say PMF is damaging. PMF is damaging because PMF is 100%. SPF is only 40 to 60%. 40 to 60%. चलो, move on. First you write PMF. Yes, obviously ना, whatever we expected, God's plan is bigger ना बबलू. हम एक्सपेक्ट किया एक चीज होने के लिए, गॉड से दो तीन चीज हो जाएगा, एक गॉड का प्लान है. थ्योरेटिकल वैल्यूज को प्रैक्टिकल वैल्यू क्यों ले रहे? क्योंकि निपुण जी थ्योरेटिकली हम असेस कर रहा है ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, बस वी आर नॉट श्योर 100%, बट ऑलरेडी हैपेंड वाला तो ज्यादा हो जाएगा, फिजिकली पॉसिबल होने वाला तो ज्यादा हो जाएगा. समझ आ रहा है? फिजिकली पॉसिबल कमिंग विद बोथ मेटोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल ह्यूज लॉस ऑब्वियसली, बट इधर भी सेम है संयम गारू. सो सेम, इट इज ए फॉर्म ऑफ एसपीएफ, मींस इधर भी सीवियर हाइड्रोलॉजिकल हो गया, सीवियर मेटोलॉजिकल भी हो गया, सीवियर मेटोलॉजिकल हो गया, सीवियर हाइड्रोलॉजिकल इधर भी हो गया, बट our expectations are always less when compared with the nature's cause. It's not in our control ना निपुण, ये तो हमारा हाथ में नहीं. So we'll take a factor of safety design 1.5 2 or 2.5. समझ आ रहा है? सडनली 5 टाइम्स ज्यादा हो गया, क्या करेंगे बोलो? हम ऐसा एज्यूम किया 1.5 to 2.5 मैक्सिमम वी कैन गो फॉर 3 इन एनी डिजाइन. हर एक स्ट्रक्चर इवन यू गो फॉर आरसीसी स्टील, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाईएस्ट वैल्यू इज 3 ओनली, बट नेचर से आ गया 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज्यादा, क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे. हाँ, that is why we are going for design flood. Ashish Garu, please understand, not Ashish, Sahil Ahmed, please understand. We are taking 30 years data and we are analyzing. 30 years data से maximum लेके हम analyze कर रहे हैं. But nature को 100 year, 150 year, 200 year data इनको पता है ना. समझ आ रहा है Sahil? Whatever our restriction is for 30 years flood data, we don't have more than that. And we can't analyze also, data will be infinite. सुनो एक बार, Sahil, 1 year में 100 rainfalls, 30 years में 3000 rainfalls. So analyzing, studying, talking about it for 3000 rainfalls is a very huge task. We can't take 50 year, we can't take 100 year, we can't take 200 year. बट नेचर से होने वाला पूरा का पूरा यूनिवर्स में हो जाएगा ना. दैट इज व्हाई. सो डिजाइन स्टॉर्म बोलते हैं. नेक्स्ट डिजाइन स्टॉर्म बोलते हैं. सो वी कैन से प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, पीएमपी, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फॉर एनालाइजिंग पीएमएफ means PMF is with respect to discharge. So to get the magnitude of probable maximum flood, you take probable maximum precipitation depth. Probable maximum precipitation depth. What is this probable maximum precipitation depth? Greatest physically possible rainfall depth. Greatest physically possible rainfall depth. That is considered for a PMF. That is taken for analyzing PMF. Standard project storm for analyzing SPF. Standard project storm for analyzing SPF. So standard project storm में क्या होता है? We'll take the theoretical data, latest 30 year data, we'll take maximum possible values, इनको standard deviation करेगा, standard error निकलेगा, finally we get standard project storm. But probable maximum precipitation में क्या होता है? Directly whatever greatest physical possible value, इनको निकल के Q, discharge निकल रहा है. So PMF is greater than SPF. Clear? Spillway design flood. Simple. Flood considered during design of a spillway. Flood considered during design of spillway. SW is a spillway. Chalo. So we have a small table here. Type of project.
storage capacity, design flood, return period value. So exclusively, अरे लक्की गारू अभी तो शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो. Exclusively for MSQ questions they can ask sentence formation से we make one table here. So we have major and medium hydraulic structures, major and medium projects, major and medium hydraulic structures. So ये major and medium hydraulic structure में क्या होता है, 60 million meter cube capacity or more. इनको storage capacity क्या होता है, 60 million meter cube capacity or more. हाँ, SW is spillway only ना, you are talking here. SW is spillway only, beta, spillway only. So these structures are mostly dams na? Major and medium hydraulic structure 60 million meter cube or more. So it will be designed for probable maximum flood and considered return period, see 1000-year return period flood. We have to consider not the shortest flood. So ये बात बताओ, फ्लड का रिटर्न पीरियड ज्यादा है, इनका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? फ्लड का रिटर्न पीरियड ज्यादा है, इनका इंटेंसिटी क्या होता है? So that damage, then damage क्या होता है, बोलो, what happened with the damage? Damage will increase ना, टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा. So that we can design for 1000-year return period. Then minor hydraulic structures. So we can say minor hydraulic structures as barrages, mini dams, small dams, barrages and small dams, less than 60 million meter cube. The check dam is a very small irrigation structure, not even minor. It is a small, very small check dam. Check dam is just an obstruction. हम इनको dam बोलते हैं, we can call it as a dam, Satish, but it is just an obstruction like this. Water is coming here, overflow and go. That's it. It's not a big dam. Less than 60 million meter cube we can say here. Less than 60 million meter cube we can say here. It was designed for a standard project flood. Means 40 to 60% of PMF. Are picture based on Satish garu. Send the picture, that will be good. Our friends also will see that when we display in the class. So you understand that PMF is for major structures. 40 to 50% of that will be SPF, that is for minor structures. Now you got clarity. Understand? Now you got clarity. Are Nipur Bhaiya, Sanyam Garu, you understand? So we can take return period of 100 years. We can take. Then small hydraulic structures. What will be small hydraulic structures? Weirs. Small hydraulic structures we can take weirs. So there is no specific capacity. Water is overflowing. We never talk about storage capacity here. So it will be for design flood. Return period is 50 to 100 years. Very small or micro irrigation projects, micro hydraulic structures, very small micro hydraulic structures. We can write culverts, aqueducts, micro irrigation. So we can give here again flow only. There is no storage. Storage does not occur here. Is there any storage in culvert? Is there any storage in canal or aqueduct? No storage. पानी continuous flow रहता है. The last is a stream जैसा होता है. Flow only इनको. So we can take same design flood. But इधर तो return period ऐसा दे रहा है 25 to 50 year return period. So ये table ज़्यादा important है engineering service exam, state exam के लिए. SSC JEE के लिए table बहुत ज़्यादा important है. Aqueduct is a cross drainage work. We study in detail in irrigation. See or no? It is a cross drainage structure. We study very detailed in irrigation chapter. Okay. गेट के लिए ये MSQ में आएगा आशीष. Only for MSQ अभी तक नहीं आ गया. अभी तक 0. ये चार्ट से 0 क्वेश्चन गेट में. Expected if MSQ will come. Somebody can say how many pages, remember Ankesh Garu ko, how many pages to leave, somebody can say na to Ankesh. If you discuss all these things na Sanyam, then people start shouting what is canal flood level, what is this HFL and all the things. So we'll discuss that detail in irrigation. Kuch mat bolo idhar. Okay, please finish this. We'll be back in a half minute. Somebody at door. हो गया, डन, कंप्लीटेड. अरे मुसाफिर गारू है क्लास में, मुकरम मुसाफिर है या नहीं?
कश्मीर से है ना मुसविर, आप कश्मीर से है ना, हमको कश्मीर से वालनट मिल गया आज। एक स्टूडेंट फ्रॉम एसएससी जेई कैटेगरी, एक कश्मीर से है आसिफ, सो ही सेंड मी, अभी आ गया वालनट्स। हाँ राउफ इज आसिफ, एक्चुअली हिज नेम इज आसिफ। चलो कंप्लीटेड एवरीवन। लक्ष्मी गारू क्या बोल रहे हैं? अखरोट। हाँ, और क्या चाहिए अरे बेटा। चलो, सो अवर टारगेट हियर इज टू नॉट टू स्टडी दिस थियरी। हाइड्रोलॉजिस्ट का टारगेट क्या होता है? हाइड्रोलॉजिस्ट का टारगेट तो ये फ्लड डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज पता होने के बाद स्ट्रक्चर का साइज, स्टोरेज रिजर्वायर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कैनाल का डेप्थ, कैनाल साइड स्लोप्स बढ़ जाएगा। दैट इज ओनली टारगेट हाइड्रोलॉजिस्ट को। सो एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। सो ये मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी पास्ट डेटा, करेक्ट, पास्ट फ्लड मार्क्स, पास्ट फ्लड मार्क्स मींस फ्रॉम द प्रीवियस फ्लड डेटा। सिंपल, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इनको वेटेड एरिया निकलना पड़ेगा ये, देन इनके बाद वेटेड पेरीमीटर भी निकालो स्ट्रक्चर के लिए टी। वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर क्या आएगा? हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर ए बाई पी मिलेगा ना, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर इज इक्वल टू ए बाई पी मिलेगा ना। अरे सिविल इंजीनियर को सिर्फ एक फार्मूला पता है, पूरा 4 साल सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में, पूरा 4 साल सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में हमको सिर्फ एक फार्मूला याद है, ये क्या है? मैनिंग्स वाला इक्वेशन। स्टार्टअप का इंटेंट लेटर है बाबू। सो ये मैनिंग गारू मोस्ट फेमस ना, इवन द स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स आल्सो रिमेंबर मैनिंग का। नाउ यूज मैनिंग इक्वेशन, यूज मैनिंग्स इक्वेशन। बट इंडिया में मैनिंग फेमस है, चेंजेस भी है, बट इंडियन कंडीशंस को मैनिंग मोस्ट फेवरेट होता है। सो हम ऐसा लिख रहे हैं जनरली, Q इज इक्वल टू AV, वेलोसिटी के लिए 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2, ये इंटू 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2। इधर तो इतना ज्यादा नहीं, इनके लिए अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन हम ओपन चैनल फ्लो में बात करेंगे ये फार्मूला से। अभी तो हाइड्रोलॉजी में कुछ नहीं था, सिर्फ ये लिखो बस हो जाएगा। विल टॉक इन ओपन चैनल फ्लो 50 to 60 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फार्मूला से, ठीक है? अभी तो बस लिखो पास्ट फ्लड मार्क्स। सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2। n is Manning's coefficient, S is bed slope. Cutter is giving you Chages coefficient. Cutter formula na, Cutter formula will give Chages coefficient. चलो हो गया। सेकंड वन, A by V नहीं, A by P, A by P निपुण गारू, R का जगह में A by P। सेकंड वन, empirical equations, empirical equations to find the discharge, discharge निकलने के लिए empirical equation। so in that first one, Dickens formula, Dickens formula, Dickens formula is suitable for North Indian catchments, North Indian catchments के लिए Dickens formula यूज हो जाएगा, स्पेशली गंगा रिवर, शारदा रिवर, इनके लिए Dickens formula मोस्ट सुटेबल हो जाएगा। क्या होता है Dickens गारू को? Q is equal to CD into A power 3/4, CD is equal to, sorry, Q is equal to CD into A power 3/4। discharge you are getting meter cube per second, area you must take in kilometer square। CD, Dickens coefficient, CD is said to be Dickens coefficient, it is between 6 to 30, 6 to 30 CD value, 6 to 30। नॉर्थ इंडिया में इनको 6 ले रहा है, कोस्टल आंध्रा, कौन रे बाबू आंध्रा से, हु आर फ्रॉम आंध्रा बोलो, कोस्टल आंध्रा 22 to 28। नो स्टूडेंट फ्रॉम एपी, अरे कोस्टल आंध्रा 22 to 28। हम तो हैदराबादी है, हम तो आंध्रा नहीं, तेलंगाना नहीं, हम तो हैदराबादी। then Rives formula, Rives formula for South Indian catchments, Rives formula for South Indian catchments। so Q is equal to same, only coefficient is changing here, CR, CR into A power 2/3। so exponent instead of 3/4, 3/4 का जगह पे 2/3 exponent, D, CD का जगह पे CR लेना पड़ेगा। Remaining everything same, discharge meter cube per second, discharge meter cube per second, area kilometer square, only change 3/4 का जगह पे 2/3, CD का जगह पे CR, CR is a Rives coefficient, CR Rives coefficient 6.8 to 10.2,
Yes, these are very important for JEE exams. Obviously, these formulas are very important for JEE exams. 6.8 catchments near east coast. 6.8 we can give catchments near east coast. East coast. And 10.2 catchments near hills. हिल्स का आसपास में होने वाला को 10 पॉइंट, हिल्स का आसपास में होने वाला को 10 पॉइंट. बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ज्योमेट्री ऑफ कैचमेंट डिफर हो जाएगा ना. कैचमेंट ज्योमेट्री, क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर्स पूरा वेरी हो जाएगा. इनका वजह से वेरी हो जाएगा पक्का. तो नॉर्थ का टेंपरेचर और साउथ का टेंपरेचर डिफरेंट है ना. हिल देखो, एट द बॉटम ऑफ द हिल देयर विल बी वैली. दैट वैली कैन क्रिएट कैचमेंट ना. सतीश गारू, श्रीशैलम पातालगंगा रिजर्वायर, this is a catchment only actually. Have you seen Patalganga reservoir, Srisalam dam? That is a natural catchment created by hills. Yes, only memory question, no numericals beta. इधर तो न्यूमेरिकल नहीं है, फार्मूला में पूछेगा. जेई में होगा, एसएससी जेई में एक्सपोनेंट का बारे में पूछ रहे हैं. दे कैन गिव q is equal to cd into a power n. What is n value as per Dickens coefficient? What is n value as per Rives formula? समझ आ रहा है? ऐसा दिएगा, q is equal to c into a power n. What is n value as per Rives, as per Dickens? English formula, English formula, Western Ghats in Maharashtra. आप महाराष्ट्र वाला ऐसा बोलेगा ना, सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स. इन इंग्लिश वी कैन से वेस्टर्न घाट्स. ये तो सह्याद्री बोलते हैं इनको. सो दैट इज कैचमेंट्स इन वेस्टर्न घाट्स. Q is equal to 124a upon under the root 10.4 plus a. So this is in kilometer square. This is in kilometer square. Area kilometer square, discharge meter cube per second. Same. But very happy here, no coefficient. No coefficient. Area of catchment, kilometer square. नवाब बहादुर जंग फार्मूला. नवाब बहादुर जंग फार्मूला देखो, इतना हो गया. देखो दक्कन प्लेट्यू में हो जाएगा, दक्कन रीजन, दक्कन रीजन. अरे अनवर गारू, तेलंगाना रीजन आ गया आपके लिए, तेलंगाना लोग के लिए आ गया. दक्कन रीजन, तेलंगाना स्टेट. हाँ, Q is equal to C into a power 0.993 minus 1/4 log 10a. Log 10a. So now the question here, what to remember, what not to remember. These are for state exams. आप नॉर्थ इंडियन स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो तो नॉर्थ इंडियन वाला डिकेन तो याद रखना पड़ेगा. साउथ इंडियन स्टेट के लिए लिख रहे एग्जाम, साउथ इंडियन राइव्स को याद करना पड़ेगा. एमपीएससी वाला, एमपीएससी स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, as well as राइव्स एंड इंग्लिश फार्मूला, राइव्स एंड इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा. महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ऑल नॉर्थ इंडियन बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेकेपीएससी आल्सो रिमेंबर डिकेन्स, डिकेन्स. ठीक है, चलो हो गया. इंपेरिकल इक्वेशंस तो चलो खत्म हो गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेट एस्पिरेंट्स बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड रिगार्डिंग गेट स्टूडेंट्स. SCS कर्व नंबर मेथड. पीएससी में ये पुराना में आ गया, अभी तक नहीं आएगा. निपुण गारू, ओल्डन डेज में ऐसा पूछ लिया, अभी तो ऐसा इंपेरिकल में क्वेश्चन नहीं आ रहा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईएससी, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. ऑल इंपेरिकल याद रखना पड़ेगा ईएससी के लिए पूरा टोटल. SCS कर्व नंबर मेथड. सो इफ बिकॉज गेट ऐसा होता है, हर एक साल थोड़ा एडवांस क्वेश्चन को देने के लिए कोशिश करेगा. दे वांट टू ट्राई समवॉट एटलीस्ट 1 or 2 न्यू न्यूमेरिकल व्हिच आर नॉट गिवन इन पीवाईक्यू. एंड दैट एडवांस्ड मॉडल इन हाइड्रोलॉजी इज दिस वन. अभी तक नहीं दिया. इफ दे वांट टू गिव सम एडवांस्ड क्वेश्चन, ट्रेंडिंग मॉडल, ट्रेंडिंग अभी यूज कर रहे, फॉरेन कंट्रीज में अभी यूज कर रहे हैं SCS कर्व नंबर मेथड. इंडिया में भी ये तो रिसर्च में चल रहा है. दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन दिस SCS, सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी. सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी, दिस इज अ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन इन यूएसए. सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी, सॉइल रिलेटेड रिसर्च करने वाला का एसोसिएशन. वहां से डायरेक्ट रन ऑफ निकलने के लिए, टू फाइंड डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, टू फाइंड डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, दे हैव प्रोवाइडेड वन फार्मूला, कर्व नंबर मेथड. So in that what they are going to say, DRO, direct runoff volume, is equal to runoff depth into catchment area. Runoff depth into catchment area. ये तो सिंपल फार्मूला है. बट ये runoff depth रहता है ना, derived from SCS method. Runoff depth to be determined using SCS method. So according to SCS method, runoff depth हमको क्या है, इंचेस में दे रहे हैं. Because it is foreign वाला फार्मूला, फॉरेन वाला फार्मूला कभी भी हमको डेटा इंचेस में दिएगा. दे मेजर इन इंचेस ओनली. इंडियन फार्मूला मिलीमीटर सेंटीमीटर में चलेगा, फॉरेन कंट्रीज में इंचेस में मिलेगा. सो रन ऑफ डेप्थ इन इंचेस इज इक्वल टू P minus 0.2 into S whole square
P minus 0.2 into S whole square upon P plus 0.8 into S. P minus 0.2 S whole square upon P plus 0.8 S. P तो precipitation, rainfall depth. P precipitation, but very important, inches में लेना पड़ेगा. We have to take in terms of inches. P rainfall in inches. Yes sir. Potential maximum retention. Potential maximum retention when runoff begins. Rainfall आ गया. So rainfall natural soil में आ गया. Rainfall falling onto natural soil. What is first activity? क्या होता है first activity? Absorption of water to convert wet soil, dry soil to wet. Then ये खत्म होने के बाद runoff चलेगा, infiltration नीचे चलेगा. दोनों साथ में रहेगा ना. Runoff is going and also infiltration is going. So what is maximum portion transformed into runoff? When runoff is going started, what is maximum retained quantity for runoff activity? समझ आ रहा है? एक बार पिक्चर से बात करेंगे. So this is soil. ये पूरा का पूरा सबसॉइल रहता है, सॉइल होता है, पूरा का पूरा सबसॉइल रहता है. नाउ रेनफॉल अकर. रेनफॉल तो दे रहे बारिश आ रहा है, बारिश. सो इनको थोड़ा क्रैक्स हो गया ना. ये क्रैक्स फिल करने के लिए पहले सॉइल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा टू कन्वर्ट ड्राई सॉइल टू वेट सॉइल. सो रिटेन करेगा ना, ड्राई सॉइल टू वेट सॉइल करने के लिए, वेट करने के लिए वाटर रिटेन्ड. हाउ मच रिटेन्ड? दैट इज कंसीडर्ड एज यस. ये रिटेन करने के बाद रिमाइनिंग रन ऑफ हो जाएगा. रन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. बस पहले तो पानी, फर्स्ट बारिश आने के बाद पहले तो पानी रिटेन करेगा सॉइल. हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन व्हेन रन ऑफ बिगिंस? दैट इज यस. समझ आ गया? दैट इज व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग फ्रॉम रेनफॉल. दैट इज व्हाई इनको सबट्रैक्ट कर रहे हैं रेनफॉल से. डिनोमिनेटर में तो ऐड कर रहे हैं, बट न्यूमरेटर में तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं. समझ आ गया? वाटर रिटेन्ड बिफोर रन ऑफ बिगिंस टू कन्वर्ट ड्राई सॉइल टू वेट सॉइल. ये कैसा आएगा? यस इज इक्वल टू 1000 अपॉन कर्व नंबर Cn minus 10. 1000 upon Cn minus 10. Cn will be, we call it as curve number. ये तो soil to soil vary करेगा ना. retention, retention will varying from soil to soil. yes or no? जगह से जगह, soil condition to soil condition, varies from soil to soil, varies from rainfall to rainfall. Rainfall to rainfall also it will vary ना. आज rainfall हो गया, कल भी tomorrow also rainfall. Tomorrow rainfall को retention 0 होता है. yes or no? Today rainfall occur, tomorrow also another rainfall. Then what is retain? कुछ retain नहीं करेगा, पूरा 100% run off चल जाए, 100%. So soil to soil and rainfall to rainfall it will be various curve number. Generally taken 60 to 100. Generally taken 60 to 100. Clear? So पहले हमारा काम क्या है? एक soil या एक rainfall को curve number निकलना पड़ेगा, standard value. That will be given in the data. That is given to you in the data. ये curve number लेके इधर substitute करेगा, you will get yes value. Then yes आने के बाद yes इधर substitute करेगा, इस rainfall value substitute करेगा, आपको runoff depth मिलेगा. Yes से yes curve number मेथड से runoff depth. Clear? We'll solve one numerical. आपको ज्यादा पता हो जाएगा. If once we start doing numericals related to it, you can understand very well. A sandy soil of soil conservation number. A sandy soil of soil conservation number 75. 75 experiences rainfall of 12 centimeters in an area of 100 kilometers square. Find runoff volume in hectare meter. Find the runoff volume in hectare meter. So we got a Cn 75 na? Using Cn 75 you get S value. S is equal to 1000 by 75 minus 10. .33. Precipitation 12 centimeter. How many inches? 12 upon 2.54. 12 upon 2.54. 4.72 inches. This is only coming in inches. Good. अब तो runoff depth मिलेगा हमको. P 4.72 minus 0.2 into 0.33 whole square upon P 4.72 plus 0.8 into 0.33. Oh, 1 minute guys, it is 3.33 not 0.33. 3.33. ये तो फार्मूला सब्स्टिट्यूशन है. रन ऑफ डेप्थ दिया ना इनको, ये फार्मूला सब्स्टिट्यूशन बस और कुछ नहीं. आप तो सिंपल मीन में करो ना निपुण गारू, आपको कैल्सी जरूरत नहीं, आप तो सिंपल मीन का मास्टर है. 2.225 इंचेस. अब तो रन ऑफ वॉल्यूम आएगा. रन ऑफ वॉल्यूम
एरिया क्या होता है? एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 into 10 power 6 meter square by 10 power 4 for hectare conversion, into 2.225 inches into 2.54 centimeter into 10 raised to minus 2 centimeter to meter conversion. Inches to centimeter 2.54, centimeter to meter 10 raised to minus 2. So क्या है अभी? 565.15 हेक्टार मीटर वॉल्यूम. क्लियर? कैसा करना क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसा हैबिचुएट होने के बाद एग्जाम में भी ऐसा सोचेगा बेटा, एग्जाम में ऐसा मत सोच लो. चलो हो गया. इंच कन्वर्शन गौरव जी सिंपल. 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर, 25.4 mm. सो इधर क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर टू इंच डिवाइडेड बाय 2.4. सो डिवाइडेड बाय 2.4 होने के बाद इंचेस में कन्वर्ट हो गया ना. इधर इंचेस है वो 2.25 इंचेस, सो मल्टीप्लाई विद 2.54, सो सेंटीमीटर मिलेगा. 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर, 25.4 मिलीमीटर. चलो, सो ये तो थर्ड मेथड है ना. कर्व, ओके, दिस इज थर्ड मेथड, कर्व फिटिंग. नंबर 4 using flood frequency analysis. Using flood frequency analysis. Flood frequency analysis में क्या होता है? PMP, probable maximum precipitation. probable maximum precipitation मिलेगा या नहीं? probable maximum precipitation मिलेगा या नहीं? So PMP, probable maximum precipitation, is equal to P average plus K into sigma. P average plus K into sigma. So ये तो mean precipitation and standard deviation पता है ना आपको? These two are common, you know it ना. P average, mean precipitation. P average, or we can say X bar, mean precipitation. हाँ, निपुण मेथड में चलेगा. स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा तो स्टैंडर्ड डिविएशन है. वो क्या होता है? K is frequency factor. This is only most important for us in this data, because remaining तो हमको पता है. Remaining values are known to us. K only to be determined. So K is equal to Yt minus Yn by Sn. K is equal to Yt minus Yn by Sn. ये तो एडवांस्ड क्वेश्चन है, ESC मेंस में लगेगा. अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आ गया, ओनली अभी तक ESC मेंस में आ गया ये मेथड. K डिटरमाइन करने वाला. K is equal to Yt minus Yn by Sn. ये Yt Yn Sn क्या होता है बात करेंगे, ठीक है? कंप्लीटेड राइटिंग. Yt flood frequency time factor. Flood frequency time factor Yt minus ln 1 minus p, minus ln 1 minus p. P क्या होता है बेटा? P is equal to probability. What is probability of occurrence? Probability of occurrence is 1 by t ना, 1 by t probability of occurrence. So minus ln into 1 minus 1 by t, Yt. Yn and Sn, probability factors. So we can get this from Gumbel's chart. So this is a standard table, Gumbel's table. वहां से मिलेगा हमको, Gumbel's chart से मिलेगा. If n is equal to infinity, means we have infinite data of rainfall. It's not a finite data, infinite rainfall data. हाँ, वैल्यूज डायरेक्टली दिएगा आपको संयम गार. Yn Sn वैल्यूज डायरेक्टली दिएगा आपको. नहीं दिया तो ये यूज करो आप. If not given, you can use this. Yn is equal to, K is equal to Yn minus 0.577 upon 1.2825. This is for infinite data. So आपको Yn Sn information कुछ नहीं है. Take it as infinite data. Take these values, 0.577 as Yn, 1.2825 as Sn. बस हो जाएगा. हाँ, this is Yt minus 0.577 by 1.2825. Yt minus 0.577 by 1.2825. Yn is 0.577, Sn is 1.2825. इसको for infinite data.
So it was not given. संयम गारू हम assume करेगा infinite data जैसा. We assume like it was an infinite data. चलो खत्म. N is the number of rainfall values ना. Number of rainfall data. P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसा दिएगा ना हमको. For a location having infinite rainfall data with an average rainfall of 46 centimeter and a standard deviation of 24 centimeter. For a location having infinite data with an average rainfall of 46 centimeter and a standard deviation of 24 centimeter, find probable maximum precipitation for a flood of 100-year return period. 100-year return period. So directly given ना data में हमको P average 46 centimeter, standard deviation 24 centimeter. But हमको ये निकलना पड़ेगा K के लिए. To find out K. K को निकलना पड़ेगा to find out K. So what can we take now? पहले YT minus ln 1 minus 1 by 100. So what are you getting YT? .6. So अब तो K आएगा हमको K is equal to, because infinite data बोल दिया 4.6 minus 0.577 upon 1.2825. Good, गौरव गारू, nice. 3.1368. अब तो आएगा हमको PMP P average 46 plus 3.1368 into 24, 121.287. So this is maximum physically possible depth of precipitation. समझ आ रहा है? Maximum physically possible depth of precipitation. Depth आने के बाद discharge निकलना आसान है ना हमको. Depth known, depth into area by time discharge, depth into area volume by time discharge हो जाएगा हमको. समझ आ रहा है? Precipitation depth मिल गया, depth into area by time, volume by time discharge. चलो we'll move on. Rational method, the last method for runoff estimation. Rational method. Rational method क्या होता है? Q is equal to CIA upon 360. Q is equal to CIA upon 360. So applicable for catchment with an area less than 50 kilometers square. Catchment area less than 5,000 hectare. Less than 50 kilometers square area. Less than 50 kilometers square. Q is equal to CIA by 360. ये Q तो आएगा हमको मीटर क्यूब पर सेकंड में, एरिया टू बी टेकन इन हेक्टार, आई टू बी टेकन mm per hour. अरे बाबू देखो, C is constant, I मिलीमीटर पर आवर, ये इन हेक्टार, और डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहा है. कुछ लोग ऐसा बोलेगा ये मेथड इंपेरिकल वाला मेथड डिराइव्ड नहीं है, ऐसा भी लेना पड़ेगा, कहां आ गया कैसा आ गया हमको पता नहीं, ऐसा बोलेगा इंपेरिकल. इवन कोई कोचिंग सेंटर मटेरियल देखो, रेशनल मेथड ब्रैकेट के अंदर इंपेरिकल फार्मूला. ये इंपेरिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल फार्मूला है. ये इंपेरिकल नहीं, प्रैक्टिकल फार्मूला. किसी को भी पता नहीं है कैसा आ गया फार्मूला. पहले फार्मूला कैसा आ गया बात करेंगे, ठीक है? फार्मूला कैसा आएगा बात करेंगे पहले. सो डिस्चार्ज क्या होता है बेटा? डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम ना. अरे ये यूनिट कन्वर्शन बाद में बात करेगा, पहले फार्मूला कैसा आ गया बात करो. CIA कैसा आ गया? वॉल्यूम बाय टाइम ना. डिस्चार्ज वॉल्यूम बाय टाइम. वॉल्यूम इज इक्वल टू डेप्थ इनटू एरिया बाय टाइम. डेप्थ इनटू एरिया बाय टाइम. व्हाट इज डेप्थ बाय टाइम? बोलो. डेप्थ बाय टाइम इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इनटू टाइम. Intensity of rainfall into time, sorry into area. Intensity of rainfall into area, depth by time. But हम रन ऑफ डिस्चार्ज बात कर रहे हैं. So ये तो टोटल डिस्चार्ज. रन ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? 100% रेनफॉल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रन ऑफ. सो इनका वजह से हम लेके आ गया ये कांस्टेंट C into I into A. समझ आ रहा है? वी आर टेकिंग रेनफॉल हियर, सो दिस इज रेनफॉल डिस्चार्ज है. हमको रन ऑफ डिस्चार्ज होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी ब्रॉट द कांस्टेंट C. C is called coefficient of runoff. Impermeability constant. Impermeability factor, coefficient of runoff, impermeability factor. ये क्या बात कर रहे हैं? टोटल रेनफॉल में हाउ मच इज कन्वर्टेड इनटू रनऑफ. टोटल रेनफॉल में हाउ मच? सो इट शुड बी फॉर एग्जांपल 40%. वी टेक 0.4.
If it is 60%, we take 0.6. If it is 10%, we take 0.1. So coefficient of runoff out of total rainfall, ऐसा rainfall आ रहा है ना इधर, rainfall आ रहा है ना, पूरा rainfall तो नहीं चलेगा अंदर, पूरा rainfall तो नहीं चलेगा runoff. It depends on soil. After soil absorbing, after soil taking for infiltration, remaining तो runoff हो जाएगा. So what percentage of remaining is converted into runoff? इनको बोलते हैं C. देखो डेरिवेशन है ना, फार्मूला को डेरिवेशन है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इनटू एरिया इनटू कोएफिशिएंट, रन ऑफ बाय रेनफॉल कोएफिशिएंट होता है. सो अब बात कर रहे हैं 360 कैसा आ गया. दिस इज कंप्लीटेड राइटिंग, दिस इज कंप्लीटेड राइटिंग. नाउ वी टॉक अबाउट हाउ 360 came. Q is equal to C I A. Always we have been provided, most of the times we are having intensity mm per hour, area hectare, C is a constant, no unit. So now I am converting mm per hour to meter per second into 10 raised to minus 3 by 3600. क्या हो गया अभी? मीटर पर सेकंड हो गया या नहीं? मीटर पर सेकंड इंटेंसिटी mm per hour to meter per second. एरिया 1 hectare is equal to 10 power 4 meter square. 1 hectare is equal to 10 power 4 meter square. अब क्या होता है कट होने के बाद? कट होने के बाद क्या होता है बेटा बोलो? ये तो पूरा कट हो गया, 0 and 10 कट हो गया. फाइनली C I A upon 360. So that is the factor given. अब बोलो Q क्या यूनिट में आ रहा है? Q क्या यूनिट में आ रहा है? मीटर पर सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर. Q मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा. Q मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा ना. इट्स नॉट इंपेरिकल, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट कन्वर्जन से मिल गया हमको 360. सो CIA by 360. समझ आ रहा है बेटा? So I to be taken mm per hour, A to be taken in hectare only. ये लिमिट क्या होता है? इंटेंसिटी ले ना, सम एवरेज इंटेंसिटी और एवरेज रेनफॉल. सो यूनिफॉर्म रेनफॉल 50 किलोमीटर स्क्वायर आने भी मुश्किल है ना बेटा. एक साथ में यूनिफॉर्म रेनफॉल 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वो भी मुश्किल है ना. 50 का ऊपर सेम इंटेंसिटी कैसा होता है बोलो? 50 का ऊपर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल सेम रहेगा क्या? ये तो वेरी हो जाएगा. दैट इज व्हाई दिस वाज क्लियर एज ऑफ नाउ. चलो थैंक यू बोल रहे हैं, बस हो गया आज. ठीक है, कंटिन्यू करेगा, कल कंटिन्यू करेगा. एनीवे क्वेश्चंस आर देयर, विल कंटिन्यू टुमारो, नो वरीज. ये चैप्टर है तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, कल खत्म करेंगे बबलू. टुमारो विल फिनिश बिकॉज़ न्यूमेरिकल, सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन. दिस वन संयम लिमिट इधर लिख दिया ना. एरिया लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर, लेस देन 5000 हेक्टेयर. ओके, सो स्टडी वेल. टुमारो विल सॉल्व न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू इट. क्वेश्चंस भी शुरू करेगा. हां, कल स्टार्ट करेंगे. चलो बाय 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 बाय. व्हाट हैपेंड अनएक्सपेक्टेड. इमरान गारू खुश रहो, एंजॉय करो बेटा. बाय बाय. क्योंकि हमको पता है ना, आप मॉर्निंग से मैथ हो गया, अभी हाइड्रोलॉजी कंटिन्यूअस 4 घंटा मुश्किल है. दैट इज व्हाई वी आर फिनिशिंग अर्ली. डोंट वरी. बाय बाय.